students to our channel Genius Math and Physics. In this video, we will dictate about the probability which is meant for class 12th. What are the chapters here? Mainly conditional probability. Conditional probability. Second one is your independent limits. Third is bias theorem. Fourth, random variables. For introduction of conditional probability and independent limits, we will make one video only, and for that the bias theorem and random variable. A random variable will take one video, and there is one video. We have decided to cover the entire portion in 3 videos. Okay, watch all these videos to excel in the probability. Then, what is conditional probability? At first, we will say what is conditional probability. Conditional probability. What is conditional probability? Conditional probability होता है क्या? इसमें 2 events E and F. There are 2 events E and F would be taken. If somebody will ask, what is P of E? If F has already occurred, F has already occurred. That means if F has already occurred, if we know the probability of F, if we know the chances of occurrence of F, then what is the chances of occurrence of E? This meaning is that the probability of E will certainly depend on probability of F. Again, if E and F are 2 events, if E depends on F, that means the probability of F, the probability of occurrence of F, okay, and E both depend on each other. E depends on F. Right? That means already F occurred. Then what is the probability of E? This is the main theme of conditional probability. We will take an example to get it in detail. Okay? Now, what is the conditional probability? If F has already been occurred, then what is the probability of E? We have to find it out. So, let us take a random experiment. Tossing of 2 coins. Tossing of 2 coins. What are the sample space? Or what are the possible outcomes? HH, HT, TH, we know that the sample space is the set of sample points. These are called the sample points. What are the outcomes or sample points? Sample points are also called outcomes. HH, HT, TH, TT. That means we can get either HH or HT or TH or TT. Commas suggests or. Comma suggests or. If I write in here HS means H and H, HT, H and T, TH, T and H, TT, T and T. But comma springs are, and if I write it like this, then its meaning is and. Bas. मतलब E on the event, if I say exactly one tail,
exactly one day. E is an event of getting exactly one day. Exactly one day like this. Exactly one day. Here one day is here. One day is here. That means the cases are HT and TH. F. Let's take another event. That at least one day. What is it? At least one day. F is an event that at least one day. What are the events? Yes, what are the sample spaces? What are the, if F is at least one day, then what are the cases you see? At least one day, that means either one day or more than one day. One day वाला case, HT, TH, two tails वाला case. We have got E exactly one day, F at least one day. That means we will focus on the conditional probability. We have taken E and F. My question is that if we know the occurrence of F, that means at least one tail वाला case हमको पता है, तो we have to find out the probability of exactly one tail. एक बार फिर I am going to repeat it again. You see, if at least one tail वाला case, if at least one tail वाला case हमको पता है, if we know the cases of at least one tail, then what is the probability that there is exactly one tail? Okay. Now we will find it out. How this will be obtained? Now conditional probability will apply that F, we know the value of F. We know the occurrences of F. जिसका occurrence हमको पता है, जिसका occurrence हमको पता है, अब जो occurrence हो चुका है, इसे हम स्लैश के नीचे रखेंगे. जिसका probability हमें चाहिए, इसको हम ऊपर रखेंगे. हमको किसका probability चाहिए? E का probability चाहिए, क्योंकि हमको F पता है. एटलीस्ट वन टेल वाला केस हमको पता है, तो इसलिए हमें क्या करना है? एग्जैक्टली वन टेल वाला केस. इसको कैसे फाइंड करेंगे? P of E स्लैश F, इसे पढ़ेंगे P of E स्लैश, जो हो चुका है, जो ऑलरेडी हो गया है, इसे हम नीचे रखेंगे, स्लैश के नीचे रखेंगे और इसे ऊपर रखेंगे. ठीक है, जिसको हम चाहिए. तो P of E स्लैश F क्या है? उसी अभी हम इसी एग्जांपल से देखेंगे कि अगर F हो चुका है, HT, TH, TT ऑलरेडी हो चुका है, इसका मतलब F already been occurred, F already been occurred. The probability of F is known to us. Then we have to find out the probability of E. So what is the probability of E then? Yes, answer is mod E by mod S. Here which is taken as mod S? This is taken as mod S. क्योंकि हमको यही पता है, F is known. Here the sample space is F only. So what is the probability of E? E में क्या क्या होता है? HT और TH. तो दो इवेंट, सैंपल स्पेस में तीन इवेंट, इसका मतलब 2/3. Probability of E is equal to 2/3. कहां से हमने निकाली है? ना probability of, here S is nothing but, here what is the sample space is? Here sample space is F, because F is known to us. Okay, that means
if we find that what is the probability that exactly one tail would occur, exactly one tail वाला केस एक दो तो दो केस, सपोज केस में तीन बनाए तो दो बनाए, यही होता है आंसर P of E स्लैश इसको एक सिंपल सी फॉर्मूला में समझा दे सकते हैं हम कि P of E slash F is nothing but P of E intersection F divided by P of F. P of E intersection F divided by P of F. तो इसको कैसे हम निकालें? P of E intersection F E STTH F STTHTB. Then what is P of intersection F? I can write it here also. How to find it out? P of intersection F by P of F is हम एक फॉर्मूला बनाएंगे. तो P of intersection F there is mod of A intersection F, mod of E intersection F divided by mod of S divided by mod of F by mod of S. डिवीजन करने पर क्या आता देखिए, P of intersection F का मान E F intersection F STTH intersection F का पार्ट 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटरसेक्शन F में 2 है, सैंपल स्पेस 4, मॉड ऑफ F 3, मॉड ऑफ S 4. हमें क्या करना था, अगर F इज नोन टू अस, हमें F पता है तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालना है. तो क्या करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E स्लैश P ऑफ इंटरसेक्शन डिवाइडेड P ऑफ F. यही फॉर्मूला, वेरी सिंपलेस्ट फॉर्मूला है. फ्रॉम दिस एग्जांपल वी गॉट इट 2/3. फ्रॉम द फॉर्मूला वी गॉट इट एज 2/3. दिस इज द basic of conditional probability. This is the basic of conditional probability. ये अगर conditional probability को और थोड़ा आगे जाए तो हमको independent probability का भी एक कंसेप्ट आ जाएगा. कैसे independent event को कैसे पता चलेगा? independent event के बारे में और हमको पता करना है क्या होता है इंडिपेंडेंट इवेंट. इंडिपेंडेंट you see in the conditional probability what we studied that probability of E is dependent on the probability of F. ये जो इवेंट F के ऊपर डिपेंड कर रहा है, that means if F has already been occurred, then what is the probability of E? इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है कि E और F दोनों इवेंट ले जाओ. E एक इवेंट है और F भी एक इवेंट है. हम अगर चाहें कि E F के ऊपर डिपेंड करे या ना करे, E होगा ही होगा. अगर E F के ऊपर डिपेंड करे या ना करे, E होगा ही होगा. इसका मतलब E का अकरेंस F के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है. ठीक है, समझ गए? E the occurrence of E will not depend on F. थोड़ा समझने के लिए कोशिश करो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में F का अकरेंस के ऊपर E का अकरेंस डिपेंड कर रहा था.
ये जरूर होगा चाहे एफ हो या ना। इसका मतलब ये है कि ई के ऊपर अगर डिपेंड भी कर रहा है, ई के ऊपर ऐसे एफ के ऊपर डिपेंड भी कर रहा है, तो इसका प्रोबेबिलिटी ई है, होगा ही होगा। एफ के ऊपर डिपेंड नहीं करता फिर भी होगा, ई होगा। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स देयर आर टू इवेंट्स, ई का ऑकरेंस होगा ही होगा अगर एफ हो या ना हो। तो इसका मतलब ये होता है पी ऑफ ई स्लैश एफ, अगर एफ हो चुका है तब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, अगर एफ नहीं हुआ भी तब भी प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब हम एक स्टेप में लिख पाएंगे कि पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय पी ऑफ ई इज इक्वल टू क्या? सॉरी, पी ऑफ एफ बाय इज इक्वल टू पी ऑफ ई। इसका मतलब ये है कि P of E intersection F is equal to P of E into P of F. That means we got a concept here that E and F are if independent events. If E and F are independent events, then P of E intersection F is equal to P of E into P of F. तुम्हें यह भी पता है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ चुके हैं एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। इसका मतलब P ऑफ E एंड F इज इक्वल टू P ऑफ E इनटू P ऑफ F। कब? तुम्हें एक स्टेटमेंट बताया गया था परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, इफ देयर आर टू इवेंट्स A and B, if A and B occur in m and n different independent ways, then both occur at a time in m into n ways. जब एंड आता है तब हम क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। आगे अपना समझ में कैसा है ये कंसेप्ट? P of intersection F is equal to P of E into P of F. In this class, what we studied is just in a blank page. पहले हम देखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है क्या। E and F दोनों इंडिपेंडेंट, नो if E and F are two events, not independent, if E and F are two events, if probability of E or happening of E depends on F, then P of E slash F को हम कहेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। जो फॉर्मूला में हम बताएंगे कि P ऑफ इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू P ऑफ E स्लैश F इक्वल टू P ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय P ऑफ F। जिसको हम एग्जांपल से भी हम क्लियर किए कि यहां पर एग्जैक्टली वन टेल नहीं है, एटलीस्ट वन टेल ले गए कि F ऑलरेडी अकर्ड, इसका मतलब होता है कि यहां से निकलना है इसका प्रोबेबिलिटी। तो ST और TS का प्रोबेबिलिटी हमको मिला 2/3। उसी एग्जांपल में हम देखेंगे 2/3 आया है। वो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट इवेंट होता है ये कि अगर F चाहे हो या ना हो, अकरेंस ऑफ F के ऊपर E का डिपेंड नहीं होता। अगर F होता है तब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ E आएगा, अगर नहीं होता है तब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ E आएगा। एक बार फिर, अगर होता है तो भी E आएगा, ना होता है भी तो E आएगा। इसका मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E स्लैश F हर वक्त प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो अगर हम फॉर्मूला में डालें तो P ऑफ इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय P ऑफ F इक्वल टू P ऑफ E, therefore P of intersection F is equal to P of E into P of F. This is all about the conditional as well as independent probability. In the next class, we will get some important examples as well as some solved numericals on the chapter.